Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 79 for that topic sexual reproduction in flowering plants or that is in angiosperms. Now we have started learning that very interesting article outbreeding devices or that is also known as the contrivances for cross pollination or allogamy, xenogamy. So contrivances I told you in the last lecture that contrivances are such specific characters shown by the plant by which one process will be made possible or compulsory and other process will be totally avoided. Isn't it? That just in one stone two birds are to be captured. One thing is that the process which we require will occur and the process which we don't require does not occur. That is called as contrivances. Okay. So here I told you that cross pollination is liked or favored by the nature. The reason also I told you. क्या reason बताया था मैंने? Because it produces new genetic combinations, variations are possible, and when variations are possible then definitely that plants can take part in organic evolution. तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करके क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो होने के लिए एक डिवाइस जो है उसे कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस दैट इज शोन बाय द प्लांट्स. One of that, four are that characters we have seen. One of the outbreeding device we have discussed in the last video. Do refer that, very interesting it is. And so many times questions are asked. Unisexuality, where the plants are producing unisexual flowers. Male flowers and female flowers are separate. And that's why autogamy is not at all possible. So please refer that video. You will get entire details there. So unisexuality is over. Now the other three we have to learn in this lecture. Dichogamy, self-sterility, heterostyle. They are also very interesting characters. Now what is meant by dichogamy? We know homogamy. तो उसके opposite है. Dichos means different. Dichogamy. That means डाइकोस का मतलब क्या आता है? डिफरेंट. हेटेरो भी कैसे कह सकते उसे. सो डिफरेंट एज ऑफ मैरिज आई विल से. Isn't it? It is said that all time the plants cannot have unisexual flowers. So many other times the plants produce bisexual or hermaphrodite flower. Bisexual or hermaphrodite, ये वर्ड हम ज़्यादातर एनिमल्स में यूज करते हैं. विच एनिमल यू नो इज hermaphrodite? यस यस, hermaphrodite यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में एंड बोथ आर फंक्शनल. नहीं तो ह्यूमन बीइंग में भी रहता है थर्ड जेंडर, बट दैट मेल एंड फीमेल both the sex organs are not maybe present there in the that minor particular with some defects there, but they are non-functional. तो उसे हम तीसरा जेंडर कहते हैं. Isn't it? तो मेल फीमेल और न्यूटर तो वो अलग है. hermaphrodite यानी both male and female sex organs are present in the same individual and both are functional. तो उसका बेस्ट एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए, वो है अर्थवम, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा. But plants are there, many plants are there, we find that where the bisexual flowers are there, where the flower, same flower contains androecium and gynoecium. यानी मेल सेक्स ऑर्गन भी वहीं पर है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी वहीं पर है. तो there are so many chances you will say that how that self pollination will be avoided. ये तो चैलेंजिंग था. ये फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम और ये एंड्रोशियम, ये दोनों भी एक ही फ्लावर में है.
So this is called as hermaphrodite flower, or this is called as bisexual flower. Now here it is very challenging, because even by the slightest movement there, the anther can transfer its pollen grain onto the stigma, and the pollination will be that completed. What is that pollination? Autogamy. What is that pollination? Self pollination. तो इसको कैसा अवॉइड करने वाले? How it can be avoided? So for that purpose, dichogamy character is there. That means even though flower is bisexual or hermaphrodite, the maturation periods of male and female sex organs, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के मैच्योरेशन पीरियड्स जो है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर डिफरेंट. दैट मीन्स दे डू नॉट गेट मैच्योर्ड एट सेम टाइम. Okay, so I will say that when stamens are ready, when anthers are ready to produce the pollen grains, to release the pollen grains, okay, so it is mature first, but at that time the gynoecium is still not receptive. It is not having the receptive stigma. Okay, ये gynoecium अभी बहुत childish है. No receptive stigma. That means here male sex organ is matured earlier than female sex organ. So this is known as protandry condition. What is the name of this condition? Protandry condition. Protoandrosium. यानी proto यानी first. यानी androsium matures first before gynoecium. Anthers start to release pollen grains even when the stigma is not receptive. उसी फ्लावर का स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है. तो हो सकता है जो प्लांट इसके पहले इससे एज में थोड़ा ज्यादा है, तो उसके अभी फ्लावर में स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ होगा दूसरे प्लांट पे. दैट मीन्स दीज पोलन ग्रेन्स आर टू बी कैरीड टू द अनदर प्लांट. नो वरी, इजंट इट? यानी ये सिबलिंग्स मान लिए हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, इजंट इट? Whenever that androsium is mature, stigma is not mature. So autogamy will not be possible. Autogamy is not possible. Such flower is called as protandrous flower. इसको फ्लावर कौन सा कहते हैं? Protandrous flower. समझ में आ रहा है? This is protandrous flower. Example of this is sunflower. हेलियांथस, हेलियांथस एन्यूअस कहते हैं उसे, बाइनोमियल नेम, isn't it? This is showing protandry condition. और कभी कभी क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है. कभी कुछ प्लांट्स में क्या होता है, when stigma is receptive, gynoecium matures earlier, waiting for that pollen grain. Now at that time the androsium is still to get developed. It is very small. Okay. Anthers immature. Anthers are immature. They cannot release the pollen grains. Stigma is receptive. यानी मैच्योर हो गया है, अब ये पोलन ग्रेन की राह देख रहा है. यानी गाइनोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन एंड्रोशियम. तो इस कंडीशन को बताया जाता है प्रोटोगाइनी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंडीशन? प्रोटोगाइनी. एंड द फ्लावर इज नोन एज प्रोटोगाइनस फ्लावर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्लावर? प्रोटोगाइनस फ्लावर. वेरी क्लियर. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज माइकेलिया चंपका. Michaelia champaka is the example of this. Very clear. अब बताओ, यहां पे दोनों भी सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में है, बट वेदर ऑटोगैमी इज मेड पॉसिबल? ऑटोगैमी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड. कैसे अवॉइड किया? कितना इंटरेस्टिंग कंडीशन बना दिया देखो नेचर ने.
नेचर की बराबरी कोई नहीं कर सकता. रियली हैट्स ऑफ टू द नेचर. यानी केवल इन ब्रीडिंग ना होने के लिए, just to avoid the autogamy, here you are finding that in first kind of the flower there, first kind of the plant there, androecium matures earlier than gynoecium. Male sex organ matures earlier than the female sex organ. And anthers are releasing the pollen grains, but stigma is non-receptive. पर स्टिग्मा तो नॉन रिसेप्टिव है. अब क्या करेंगे? यानी दिस पोलन ग्रेन्स इवन दो विल फॉल ऑन द सेम स्टिग्मा विल नॉट बी ऑफ एनी यूज, दे विल बिकम डेड, क्योंकि स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं है, अभी तैयार ही नहीं हुआ है स्टिग्मा. तो पोलन ग्रेन अगर उसी फ्लावर में भी गिर गए on that gynoecium, that is not mature, that will be useless process, and the process of pollination will not be successful. ध्यान में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है. Such type of the condition where male sex organ matures earlier is known as protandry condition. Such flowers are called as protandrous flowers. The example, best example is sunflower, Helianthus. और दूसरी इसके अपोजिट क्या है? इन सम ऑफ द प्लांट्स व्हाट हैपेंड देयर, द फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोशियम मैच्योर्स अर्लियर. फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोशियम मैच्योर्स अर्लियर. दैट मीन्स स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव and waiting for the pollen grain. But at that time the androecium is very young, still playing with the toys. अब ये एंड्रोशियम इतना यंग है कि अभी भी टॉयज के साथ ही खेल रहा है, बच्चा है अभी, isn't it? It is not ready for producing the pollen grains, and that's why इसको अगर पोलन ग्रेन मिलना है तो ये काम में आ सकता है क्या? नहीं काम में आ सकता है. It will have to take the pollen grain from the other flowers of other plant. That means xenogamy or hybridization, that is important. That is compulsory. Cross pollination is compulsory. Such type of the flower where female sex organ matures earlier than the male sex organ is known as protogyny condition, and the flowers are called as protogynous flowers. And because of this only the cross pollination or outbreeding is made compulsory, despite of the fact that flowers are bisexual. फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी आउटब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन कंपल्सरी हो जाता है, एंड दैट इज दैट कॉन्ट्रीवेंस और आउटब्रीडिंग डिवाइस. ध्यान में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है. ओके, तो ये पूछा जा सकता है, एंड आवर नॉलेज शुड बी वेरी परफेक्ट देयर, इवन दो MCQs can also be framed on that. Now the another condition is there, that is also very interesting condition, and that is known as self-sterility. उस कंडीशन को कहते हैं self-sterility. Now what is mean by self-sterility? Sterility का मतलब तो आपको मालूम है. Self-sterility, sterile means non-fertile, means what? जो फर्टिलिटी नहीं दिखा सकता उसे स्टेरिलिटी कहते हैं. सुपिक नहीं, नापिक, isn't it? That is called as the fertility, that sterility, self sterility. Now the interesting condition is that here the plant produces bisexual flowers, isn't it? Default it produces bisexual or hermaphrodite flower like this, even though the maturation periods are same. That is called homogamy, isn't it? Maturation periods of androecium and gynoecium are same, not dichogamy. कितना चैलेंजिंग है देखो. अभी क्या होता है, that even though the slightest movement of anther and stigma, that wind current is there, then that anther will touch the stigma, there are chances that the pollen grains from that same anther may fall onto the
stigma of the same flower and autogamy is inevitable. अटल है, ऑटोगैमी तो होने ही वाली है, हम कहेंगे अभी दोनों मैच्योर हो गए हैं, दोनों साथ साथ है, तो थोड़ा भी अगर टच हो जाएगा तो pollen grain may get transferred from anther onto the stigma and the autogamy will be there, that cannot be avoided. पर ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, उसके बावजूद भी सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट इफेक्टिव, डज नॉट ऑकर, बिकॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर that pollen grains and that stigma, they are incompatible, isn't it? That here pollen grains become sterile. Pollen grains are incompatible when fall on same stigma, when fall on stigma of same flower. सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर जाएंगे पोलन ग्रेन तो दे विल बी इनकॉम्पैटिबल. इनकॉम्पैटिबल मीन्स व्हाट? मीन्स स्टराइल, मीन्स दे विल नॉट जर्मिनेट, they will not germinate, will not be able to produce the male gamete, they will not undergo fertilization. ये पॉइंट ध्यान में रखो, that pollen grains if by mistake get utilized for the same flower, for the same stigma, will become incompatible. उनको ऐसा कर्स ही दिया है, शाप है उनको, अगर वो उसी स्टिग्मा पर जाएंगे तो उनको श्राप क्या दिया गया है? that they will not be able to produce the gamete and they will be particularly sterile, they will not be fertile. ये इसे कहते हैं कल्चरल इवोल्यूशन. दिस इज कॉल्ड द कल्चरल इवोल्यूशन शोन बाय द प्लांट. द सेम इज शोन देयर बाय ह्यूमन बीइंग. अब ह्यूमन बीइंग में देखो ना कितने फैमिली ऐसे होते हैं जहां पर दैट मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स, दैट ब्रदर एंड सिस्टर may both get matured at the same time. Brother and sister both may get matured. But does it possible that the self crossing will be there, inbreeding will be there? Not at all, because of the moral ethical relation there. ब्रदर सिस्टर का ये इथिकल रिलेशन है, तो वैसा ही यहाँ पर है. ये स्टिग्मा और ये एंथर, एंथर जो है तो वो ब्रदर है, स्टिग्मा जो है वो सिस्टर है. And they will not carry out the self-pollination or that crossing. This is called as self-sterility, and because of that, this is the best outbreeding device. Where flowers are bisexual, where flowers are homogamous, maturation periods of both male and female reproductive organs are same. Anther is releasing the pollen grain, stigma is receptive at the same time, but if the pollen grains are utilized for pollination on the same stigma or on the stigma of the same flower, they will not be able to produce male gamete. They will be incompatible for that stigma. They will be non-fertile for that stigma. They will be sterile. वो sterile बन जाएंगे. They will not produce the gamete. समझ में आ रहा है? And this is called as self sterility. This is shown by the plants like orchids. Orchids ये उसका एग्जाम्पल है. ध्यान में आ गया? And this is a kind of cultural evolution. Okay? So this is that number 3. अब number 4 जो है वो है heterostyle. हाँ, एक बात इसमें है, ये pollen grain when they get utilized on the stigma of the different flower of different plant, then they will be compatible. सिर्फ खुद के स्टिग्मा के लिए वो incompatible है. But if that pollen grains will be carried on another orchid plant, on the another flower, they will be fertile. Okay? अब ये है heterostyle, number 4.
हेटेरोस्टाइली नाम ही आपको काफी है, isn't it? Styles are of different length. There are two varieties of flower producer. This is the style. One is having the style of long length and anthers are very short. Okay. And in other variety produced on other plant, the anthers are at high level and stigma is no doubt receptive, but that is at down level. So this unequal length of style in the two different plants is known as heterostyling. तो इससे क्या होता है? इससे एक ही चीज होती है, सेल्फ क्रॉसिंग और ऑटोगैमी इज व्हाट इज दैट डिप्रेस और डिस्करेज, इजंट इट? ऑटोगैमी के लिए ज्यादा संधि यहां पे नहीं है. ऑटोगैमी गेट्स डिस्करेज. ऑटोगैमी के लिए ये तो यहाँ का पोलन ऐसा वहां पे जाके गिरेंगे, चांसेस ही नहीं. आप कहेंगे सर यहाँ पे गिर सकता है ना? वेरी रेयर चांसेस आर वेरी रेयर, क्योंकि वो ऊपर से हाइट से अगर ये पोलन ग्रेन आएगा तो बिल्कुल ऐसा एक पूरा निशाना बना के स्टिग्मा पे जाएगा, ऐसा नहीं है. इधर उधर किधर भी गिर सकता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई चांसेस आर वेरी वेरी लेस. आई विल से दैट the self pollination or autogamy is discouraged. The pollination will be successful only when it occurs into that anther and the stigma present at the same height, but they are present in different plants. ये अलग अलग प्लांट्स पे, ये एक प्लांट है, दिस इज प्लांट नंबर ए, दिस इज प्लांट नंबर बी. ये दो अलग अलग प्लांट्स है. दैट्स व्हाई आउटब्रीडिंग इज कंपल्सरी. समझ में आ रहा है? द एग्जाम्पल ऑफ दिस हेटेरोस्टाइली इज primrose. Primrose or primrose is the example of this. Primula भी कहते हैं इसे. ओके, तो ये अच्छी तरह से ध्यान ले लो. नेचर का बिल्कुल मोस्ट एडमायरेबल जॉब नेचर हैज डन दैट. चारों भी कॉन्ट्रिवेंसेस अच्छी तरह से लर्न कर लो. ये आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, आइदर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन और इन द MCQs. So I'm sure, I'm confident you must have understood all this part very properly. So do give the likes and shares to this video, and बिल्कुल मेरे काटे सर बायोलॉजी चैनल को आप सब्सक्राइब करो, and every day keep watching the MCQs. MCQs भी watch करते चलो, and you will get benefited, I'm sure. Okay, thanks a lot.